गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आई होप यू विल बी सेफ एट होम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सुरक्षित हो गए, सेफ हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट लेक्चर on this chapter, and name of the chapter that is electricity and or magnetism and electric current or current, electricity and magnetism. In the previous lectures, we have detailed study about the effects of electric current, electric effects. But in the today's lecture, we will discuss about the magnetic effects of electric current. How does the electric current produces? How does the electric current creates the magnetic effects? Means when the electric current flow through any conductor, that time it creates the electric field. Very simple phenomenon here. किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है, that time that conductor will produce electric field around itself. But that electric field behaves like that electric field works as a magnetic field. That electric field behaves as a magnetic field, and this phenomenon is invented by Sir Hans Christian Oersted was the name of the scientist, and he described that electric field and magnetic field are equal phenomena. So chalo, how should the electric current produces the magnetic field, or how should the electric current produce effect? How should the electric current produce the magnetic effect? Please open your book at page number. पे अपना जो टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर दैट इज 24. सॉरी, पेज नंबर ओपन करो, दैट इज 26 पेज नंबर, एंड नेम ऑफ द heading of our topic, that is magnetic effects of electric current. And what is the name of our chapter? That is current, electricity and magnetism. Current, electricity and magnetism. Now you have at the page number 26 in your textbook, you have given the diagram. The diagram relates the diagram regarding with magnetic effect. Initially I draw the diagram, then I will explain you about the magnetic effect. What is the diagram? First you should take a conducting wire, and that conducting wire is connected to, here is a matchbox. means तो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स का जो ट्रे होता है, दैट इज द ट्रे ऑफ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स का जो ट्रे जिसमें हम जो स्टिक्स होते हैं, मैच स्टिक्स जो होते हैं हम प्लेस करते हैं, दैट इज दिस टाइप ऑफ मैच बॉक्स. A matchbox है, and in this matchbox we have located the magnetic needle. यहाँ पे magnetic needle हमने लोकेट किया है. This is the magnetic needle. We have located the matchbox. Then this matchbox is wounded with copper wire. This is the copper wire, and the end of copper wire, देखो, one end of copper wire, this is the one end of copper wire, and it is the another end of copper wire. There is a electric bulb, means it is a type of circuit. Okay. Now we have placed here the electric cells. What is the function of the cell? Tell me, what is the function of the cell? यहाँ पे इलेक्ट्रिक की है. In the last lecture we have discussed about the various components of electric circuit. First one, what is it called? That is electric cell. What is the function of the electric cell? Electric cell का क्या function है? Electric cell produces, electric cell provides the
potential difference. Applies the potential difference. Second, the symbol represent the electric plug or plug key. We also call it plug key. What is the function of the plug key? We have discussed in the last lecture. Tell me, क्या है प्लग की का फंक्शन? प्लग की इज इंपॉर्टेंट. व्हाई प्लग की इज इंपॉर्टेंट इन द सर्किट? सर्किट में प्लग की क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज प्लग की अलोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो और स्टॉप ऑफ द करंट. प्लग की क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो और स्टॉप करने का फंक्शन कैरी करता है. उसके बाद नेक्स्ट दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या फंक्शन होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब इज इसेंशियल टू फाइंड द प्रेजेंस और absence ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर. एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज और फोर्थ डिवाइस दैट इज कंडक्टिंग वायर. ओके, नाउ दिस कंडक्टिंग वायर इज राउंडेड और wounded with the tray of the match box. मैच बॉक्स जो होता है, मैच बॉक्स का जो ट्रे होता है, उसी ट्रे में, ट्रे मीन्स जहाँ पे हम स्टिक्स, मैच स्टिक्स हम प्लेस करते रखते, दैट इज द मैच बॉक्स, ट्रे ऑफ द मैच बॉक्स. एंड इन दैट ट्रे वी हैव टू प्लेस द मैग्नेटिक नीडल. दिस इज द मैग्नेटिक नीडल. एंड व्हेन दिस मैग्नेटिक नीडल इज एट द रेस्ट पोजीशन, जब ये मैग्नेटिक नीडल रेस्ट पोजीशन में होता है, दैट टाइम it always denotes south and north direction. At the rest position, what does the magnetic needle indicate? Magnetic needle stables, magnetic needle indicates the south and north direction while it is in the rest position. Now this copper wire is wounded, conducting wire is wounded with this tray, match tray having magnetic needle at its base, and one end of the magnetic conducting wire is connected to positive terminal of the cell, and second end of the conducting wire is connected to negative terminal of the cell. Okay, in this position or in this device we have placed electric key and second electric bulb. These are also important devices. ये भी important devices है और these devices are required in ये devices जो होता है वो devices भी जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करते हैं तो ये डिवाइसेस भी क्यों इम्पोर्टेंस है. नाउ दिस सपोज यहाँ पे this is the electric key. Now this electric key is open. Okay, means the supply of electric current is stopped here. If you saw the position of this magnetic needle at this condition, then you will notice this magnetic needle is at the rest position. The magnetic needle constant rest position में रहेगी, means it is not deflected, it is constant. But as soon as if we close the key, यहाँ पे मैंने की close किया, means what will happen now? The flow of electric current is start, or the electric current starts through this conducting wire, and therefore this bulb will close. And when this bulb will glow means what does it indicates? The connecting of plug key, or when the plug key is connected, the electric current flows through this bulb, and this bulb जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होता है, बल्ब क्लोज होता है. बट एज सून एज इफ यू सॉ टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल, जब आपने मैग्नेटिक नीडल की ओर देखा तो यू विल नोटिस दैट दिस मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड. तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या होगा? डिफ्लेक्टेड होगा. मींस देयर इज अ चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. व्हाई यू विल गेट the changing position of magnetic needle? Because the conducting wire is wounded here, and when the current passes through the wire, means current यहाँ से भी pass होता है, and therefore this current produces the electric field. But just I have told you, अभी मैंने कहा है electric field works as a magnetic field, and therefore because of that magnetic field you will get the deflection of the needle. But as soon as you
turn the key or as soon as if you stop the supply of electric current, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई स्टॉप किया मींस ये की ओपन किया, then the supply of electric current is the flow of electric current is stopped here, means bulb will be also buzz off, and if you saw towards the magnetic needle, then you will notice that the magnet deflection of magnetic needle will be also stopped and the magnetic needle will be got at rest position. तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में हो गया, मींस एट द इनिशियल पोजीशन और इट वाज एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है। मींस व्हाई यू गेट द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल फर्स्ट, तो आपको पहले मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों मिला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसके पीछे, you will get the deflection of magnetic needle because of flowing of electric current through the conducting wire, and this conducting wire creates the electric field and that electric field works as a magnetic field, and because of that magnetic field there is a deflection of magnetic needle. It means when electric current flows through the conducting wire, it creates the magnetic effect. Very simple answer there. And this phenomenon is invented by Sir Hans Christian Ørsted. ओके, तो ध्यान में रखो, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने का जो डिस्कवर इन्वेंशन है वो सर क्रिस्टियन ओरेस्टेड जो है इसने डिस्कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज व्हेन द करंट इज स्टॉप हियर, ये करंट स्टॉप होगा तो बल्ब ब्लो हुआ वो भी स्टॉप हो जाएगा और ये ओरिजिनल पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। दिस एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू एट होम आल्सो एंड आई थिंक आई होप, और आप सभी लोग ये एक्सपेरिमेंट आपके घर पे कर सकते हैं और करो, 100% करोगे, आप घर पे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट, क्या है एक्सपेरिमेंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो, देयर इज अ स्क्रू, एक स्क्रू है और फंक्शन ऑफ द स्क्रू देखो, दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रू, this is the function of the screw, sorry, what is iron screw है, ये iron screw है, this screw has turns, ये पर यहाँ पे turns होते हैं। ओके, नाउ कॉपर इंसुलेटेड वायर जो होता है वो कॉपर इंसुलेटेड मींस उसका इंसुलेटर जो होता है अपर जो लेयर है वो लेयर क्या करो, रिमूव करो, मींस उसको कॉपर वायर मिलेगा, वो वायर क्या करो अभी 1 बाय 1, देखो यहाँ पे वायर है और वायर का जो एंड है तो यहाँ पे करो, सबसे पहले टर्न करो, देखो यहाँ पे ऐसा टर्न करो और वाइट टर्निंग करते समय ध्यान में रखो तो डबल नहीं होना चाहिए, मीन्स इन दिस वे यू कैन and the both ends of wire is connected to electric cell. ध्यान में आ रहा है, how do you can connect the how should you can turn the wire कैसे टर्न करने का, तो वो एक जो एज राउंड होता है वो राउंड 1 by 1 आना चाहिए and both ends of wire is connected to the cell है। We know what is the function of the cell. Cell का function क्या है? The function of the cell that is provide the electric current और apply the potential difference. यहाँ पे ऐसा cell हमने draw किया है। Okay. Now, as soon as if you attach the both end यहाँ पे plug किए, this is the plug key, and as soon as if you connect the both ends of wire or as soon as you close the plug key, जब आपने ये plug key close किया what will be happen,
क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस, इलेक्ट्रिक करंट विल बी पास थ्रू दिस वायर, और इलेक्ट्रिक करंट वायर से क्या होगा, पास होगा. ओके, when we know when the electric current passes through the conducting wire, it produces the electric effect. Sorry, an electric effect means magnetic effect. Okay, therefore at this screw or iron nail, ये जो iron nail है, यहाँ इस iron nail में क्या होगा, magnetic effect create होगा. And due to that magnetic effect, if you close the very small जो iron pin होता है, ये pin जब आपने यहाँ पे close किया है nail से, it will be attached to the nail. तो ये nail को क्या हो जाएगा, वो attach हो जाएगा. Why it will be attached to? Tell me why it will be attached to the, ये जो पिन है, ये आयरन पिन जो है, स्मॉल पिन, ये क्यों आयरन पिन को क्यों, स्क्रू को क्यों अटैच हो जाएगा? Because that screw has magnetic field. वो स्क्रू में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. हाउ डज दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द स्क्रू? ये स्क्रू में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. एट द इनिशियल टॉपिक और द फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, when electric current passes through the electric wire, conducting wire, it produces the magnetic effect. Therefore in that screw produces the magnetic effect, and because of that magnetism in that screw, this iron pin will be touched. Now if we have touched the another pin which is at the end of, देखो यहाँ पे दूसरा पिन मैंने अटैच किया, it will be also attached. Third pin means magnetic effect produces from this iron screw, the magnetism will produce, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस पिन में से इस पिन में, in this way. But as soon as if we remove the plug, as soon as if we remove the one end of wire, copper wire, और ये plug open किया मैंने, now tell me what will be happen here? क्या होगा? When we remove the plug, when we remove the one end of the wire from the सेल में से एक वायर मैंने कट किया, नहीं तो ये प्लग जो है प्लग ओपन किया, what will be the flow of electric current will be stop किया, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, and therefore the producing magnetic effect will be also cancelled, and that's why this chain of the pin will be collapse, or that iron will फेल, और ये फॉल हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिज्म और द whatever the magnetism is produced in this nail, it will be removed, it will be cancelled due to avoid of electric current, due to stop of electric current. Therefore such magnet is called as electromagnet. Means ये magnet जैसा function वर्क करता है, but this function or this magnetism is produced in this iron screw, although until it has electric current. जब तक electric current flow होता है तब तक यहाँ पे क्या है, magnetism है. The magnetism is produced in any iron nail due to electric current. Such iron is called as electromagnet. Okay, जो फंक्शन जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेट. Okay, and nowadays these magnets are used to produce strong magnetic field in the scientific research. आज जो हम क्रेन वगैरह जो होते हैं, उसी क्रेन में जब हम लार्ज आयन हेवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, आयन ऑब्जेक्ट हम जब पिक करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उसी क्रेन्स में आयन ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल. You have a question for 3 marks. Explain the structure and function of electric bell. An electric bell works on electromagnet. Or electric bell or it is also called as doorbell. You are very familiar with the function of the doorbell. अपने घर में जो doorbell है, वो doorbell का जो function है, that function is also related to electromagnet. Okay, तो चलो let's start the next topic, that is doorbell or electric bell.
You have a very important topic. You have a question for it. You have question for 3 to 4 marks. Draw or explain the working structure and function of electric bell with figure. Electric bell. Electric bell or it is also called as doorbell. सबसे पहले आपको डोरबेल एक्सप्लेनिंग के लिए आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है विथ फिगर और 2 मार्क्स के लिए फिगर भी ड्रॉ करने के लिए आता है इलेक्ट्रिक बेल का। तो इलेक्ट्रिक बेल का सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट और एक्सप्लेन अबाउट द डोरबेल। ओके, नाउ दिस देखो देयर आर 2 आयरन मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, this horseshoe magnet. Now this horseshoe magnet this is the copper wire and one end of copper wire is horseshoe magnet is connected with copper wire. Now यहाँ पे की now say plus minus, then this is the iron strip here, now this is the contact screw, और this contact screw is यहाँ पे एक आयन स्ट्रिप है, इट इज फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है आयन स्ट्रिप, एंड अदर एंड ऑफ आयन स्ट्रिप इज कनेक्टेड, कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द आयन स्ट्रिप. This is the structure of. Now यहाँ पे स्ट्राइकर है, दिस इज द स्ट्राइकर, यहाँ पे बॉम्ब है. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेकेंड यहाँ पे डीलर की, थर्ड वन इलेक्ट्रिक सेल, फोर्थ वन कॉन्टैक्ट स्क्रू, contact screw, and last one that is iron strip. This is the iron strip, it's the striker, and last one that is gong, or it is also called as gong or bell. Now how does the electric bell works, or what is the function of electric bell, or what is the structure of electric bell? सबसे पहले देखो, now this is the copper wire, this copper wire is connected to the contact screw. One end of copper wire देखो, one end of copper wire is connected to the contact screw, and second end देखो, this copper wire, यहाँ से copper wire start होता है, and this copper wire is राउंडेड टू द हॉर्सशू मैग्नेट, ये एंड है, यहाँ से फिर कनेक्टेड होता है, एंड दिस एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एंड इज कनेक्टेड टू कॉन्टैक्ट स्क्रू. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, दिस कॉपर वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू कॉन्टैक्ट स्क्रू, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज connected to the horseshoe magnet. This is what is the function of the horseshoe magnet? It works as an electromagnet. Just we have told like as an electric screw. Electric screw में जैसा होता है वैसे ये
हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ पे आयरन नेल्स है और वहाँ पे मैग्नेट क्या किया है, राउंड सॉरी इलेक्ट्रिक वायर राउंड किया है, देयरफॉर इट वर्क्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट और या इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा फंक्शन कैरी करता है। नाउ वी attach the when we attach the stick or both end of key is attached to each other, then what will be happen, क्या होगा, the wire the electric current passes through the conducting wire या conducting wire में से electric current pass होगा, and that is why this wire rounded or wounded with this horseshoe magnet, therefore in this horseshoe magnet when wire passes through it will produce the magnetic field, it will produce the magnetic field, यहाँ पे magnetic field produce होगा, magnetism produce होगा, means horseshoe magnet works as a electromagnet. Okay, now other end of the wire is connected to this flexible or a flexible strip है, flexible means वो movable है, therefore due to this flexible, ये flexible जो strip है यहाँ पे other end है, and this end positive terminal of the wire is connected to contact screw, therefore due to magnetism यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, therefore this iron strip और this striker, ये जो striker है it is made up of an iron, ये iron से बना है, and therefore we know iron is the magnetic substance, iron एक magnetic substance है which is attracted towards the magnet, कि जो magnet की तरफ क्या होता है, attract होता है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिज्म, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म दिस मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट्स द स्ट्राइकर, ये मैग्नेटिज्म ये स्ट्राइकर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन व्हेन स्ट्राइकर अट्रैक्ट्स टुवर्ड द मैग्नेटिज्म, बट इन द वे बिटवीन द स्ट्राइकर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इट हैज प्लेस्ड द बेल, इट हैज प्लेस्ड द गॉड, या दोनों के बीच में क्या बैठा है, क्या प्लेस किया है, एक बेल प्लेस किया है, therefore this striker knock on this gong, this striker struck on the bell, knock on the bell and it produces the sound, but when we press, अब देखो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है हम खाली 2 और 3 सेकंड्स के लिए हम प्रेस करते हैं, until we press, जब तक हम प्रेस करेंगे तब तक यहाँ पे क्या रहेगा, until we press the key magnetism is produced here and therefore striker attracts toward the gong. If we remove the key, if we open the key, जब ये key open किया what will happen, the flow of current passing through the wire will be stopped, therefore magnetism will be also cancelling this electromagnet, and due to cancelling the magnetism in the electromagnet this striker will also goes on its ओरिजिनल पोजीशन, ये स्ट्राइकर और फिर उसका ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, मींस साउंड डज नॉट क्रिएट देयर, तो साउंड वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। इन दिस वे दिस इलेक्ट्रिक बेल इज आल्सो वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी देखो यहाँ पे खाली साउंड बजेगा, बट वी हैव टू डिफरेंट ट्यून्स, तो आज हम जो इलेक्ट्रिक बेल हम घर में जो यूज कर रहे हैं उसी इलेक्ट्रिक बेल को डिफरेंट तरह के जो ट्यून्स होते हैं, तो फॉर दैट ट्यून्स वी हैव अ बजर, आपको एक बजर मिलता है 60 to 80 रुपीज में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक शॉप से, उसी शॉप में एक बजर मिलेगा, दैट बजर हैज 3 to 4 डायलर टूल्स आर ऑलरेडी, वहाँ पे 4 to 5 डायलर टोन्स जो होता है वो बजर में क्या क्या होता है, फीड क्या होता है, एंड व्हेन वी अटैच द बजर जब हम इसी को अटैच करेंगे और व्हेन वी सिलेक्ट द बेल, और जो भी ट्यून है जो हम सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ नॉकिंग द साउंड, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड इट विल क्रिएट द, तो टोन क्या होगा जो सिलेक्ट करेंगे हम वो टोन क्या हो जाएगा, बजेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, इन दिस वे वी हैव टू फिनिश, इस तरह हमने चैप्टर फिनिश किया है। वी विल कंडक्ट द और टेस्ट ऑन इट, हम इसी चैप्टर पे और भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो देन देयर इज ओनली लास्ट चैप्टर, दैट इज सेकेंड चैप्टर रिमेनिंग, वी विल ऑल्सो कंटिन्यू इन द
नेक्स्ट वर्चुअल क्लास। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, दैट इज व्हाई यू विल गेट द notification of latest videos. Thank you.